Chalo, let me move to the case study. Let me take you straight away through these questions and just try to learn. Don't try to memorize obviously कि इनके आंसर क्या हैं, but just try to learn कि तुमने क्या आंसर किया हुआ and how you were supposed to answer these questions. Now, use a production possibility curve diagram to show what is expected to happen to the Venezuelan economy between 2014 and 17. Now, this is again testing you on the same concept जिस पे तुम्हें section B का question आया हुआ था कि PPC, if a country it is experiencing unemployment, that means that that country is operating at a point inside its PPC. Again, remember good A, good B label करो. और तुम्हें इस पूरी केस स्टडी में बार बार बताया जाए वेनेजुएला's economy is in a disastrous state, there is unemployment, there is lack of this, there is lack of that, मतलब तबाह हो रही है उनकी इकॉनमी. एंड आई मीन आई एम नॉट गोइंग बैक, लेट मी गो बैक हेयर. यहाँ पे कहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट भी वो मेंशन कर रहा है बार बार कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ लेट मी नॉट वेस्ट टाइम टू ट्राई एंड फाइंड द एग्जैक्ट वर्ड बिकॉज आई एम श्योर यू ऑल हैव स्टडीड दिस, रेड दिस, बाद में भी पढ़ सकते हो. सो देखो उसमें इफ़ देर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकॉनमी वैसे का बड़ा निकल रहा है तो जस्ट कम अप विद एनी रीज़न फॉर दीज 2 marks, ड्राइंग अ प्रॉपर PPC के लुक थ्रू PPC वी कैन डिपिक्ट के व्हाट इज़ हैपनिंग इन वेनेजुएला. मे बी देर इज़ अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सो दिस डिपिक्ट्स व्हाट इज़ हैपनिंग इन वेनेजुएला. दे आर इनसाइड द PPC. और यू कैन से कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरी इकॉनमी की बेस ही तबाह हो गई है, विच वुड मीन देयर प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज़ फॉलिंग एंड देयरफॉर द PPC इज़ शिफ्टिंग इनवर्ड्स. बेसिकली दिस इज़ द कॉन्सेप्ट दैट द एग्जामिनर वांटेड टू टेस्ट कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते तो यू हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम दैट वेनेजुएला इज़ ऑपरेटिंग इनसाइड इट्स PPC. इफ़ यू टॉक अबाउट कि उनकी पोटेंशियल ही कम हो गई है तो यू हैव टू शो अ शिफ्ट ऑफ PPC. डोंट स्पेंड मोर देन 2 minutes ऑन दिस क्वेश्चन. नाउ कुछ तुम्हारे में से शहजादे हैं, दे डिड दिस इन दिस क्वेश्चन. मतलब नाराज़ हो तुम एग्जामिनर से, मतलब क्या मसला क्या है तुम्हारा? विल दिस टेल मी एनीथिंग कि तुम मुझे क्या बताना चाह रहे हैं? सो उसमें आई डोंट नो व्हाई आई हैव टू टेल यू दिस. बी सेंसिबल. साथ एक लाइन लिख लो कि दिस फिगर 1 इज़ अ PPC विच शोज द मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. वो नहीं लिखना, तो जस्ट लेबल इट. You can see a PPC where country produces good A or B, and what is happening in Venezuela is that they are operating at a point inside their PPC. सिर्फ इस तरह से, आई मीन एग्जामिनर तुम्हारा नौकर तो नहीं लगा हुआ कि अच्छा तुमने बड़ी मेहरबानी की है, 2 लाइनें लगा दी हैं, नाउ ही कैन मेक अप हिज माइंड कि तुम क्या कहना चाह रहे हो. सो डोंट बिहेव इन अ वेरी अनटाइटल्ड वे. बिहेव इन अ वे कि एग्जामिनर की मिन्नत तुमने करनी है, उसने नहीं तुम्हारी मिन्नत करनी. सीरियसली आई मीन चेकिंग योर एग्जाम समटाइम्स आई गेट द फीलिंग कि अच्छा बड़ी तुमने जहमत की है, 2 लाइनें लिखनी है तो बता भी दो कि क्या लिखे. Alright, explain what the change in price of oil in 2015 and the resulting fall in Venezuela's earnings from oil exports suggest about the price elasticity of demand for Venezuelan oil. Now, price elasticity of demand और ये जो question था तुम्हारे से, this was just testing you on this thing. Total revenue is equal to price into quantity. हम export spending की बार बार बात करते रहे हैं कि look, when export prices फॉल, फॉर इंस्टेंस हमारा एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि व्हेन एक्सपोर्ट प्राइसेस फॉल इन द शॉर्ट रन एक्सपोर्ट क्वांटिटी जस्ट इंक्रीजेज वेरी स्लाइटली. सो तुम्हारी एक्सपोर्ट अर्निंग्स EE वो कम हो जाती हैं. वाई? बिकॉज तुम्हारी एक्सपोर्ट क्वांटिटी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही एंड वी से एक्सपोर्ट डिमांड इज़ इन इलास्टिक. दैट इज़ एग्जैक्टली द थिंग ही वॉज आस्किंग यू ओवर हियर. पैराग्राफ में देखो ऊपर, इट इज़ वेरी क्लियरली मैंशन के ऑयल विच इज़ द एक्सपोर्ट ऑफ वेनेजुएला, एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ दैट ऑयल हैज़ गॉन डाउन बट देयर एक्सपोर्ट अर्निंग्स हैव ऑल्सो गॉन डाउन. तो तुमने इस चीज़ को पूरा करना था कि अच्छा एक्सपोर्ट की प्राइस कम हुई है, एक्सपोर्ट क्वान्टिटी शुड इंक्रीज बट अर्निंग्स कम है, विच मीन्स एक्सपोर्ट क्वान्टिटी इज़ नॉट इंक्रीजिंग दैट मच इन इलास्टिक डिमांड. Those who got right, they got it right very easily. They sort of gave exactly the same explanation. जो तुक्के मार रहे हो, I mean तुक्के मारने में I would suggest नज़र आ रहा होता है कि तुम्हें नहीं आता है, I mean तुक्के मार रहे हो, उससे बेहतर कोई और क्वेश्चन देख लिया करो. Try to get some marks out of somewhere else. Clearly it is visible कि तुम्हें आता ही नहीं है, I mean लेफ्ट राइट की छोड़ी जा रहे हो तो. Now another easier way of thinking about it is कि the paragraph is telling you again and again ऑयल की प्राइस कम हो गई है बट ऑयल से अर्निंग्स भी कम हो गई हैं. सो वो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू P इंटू Q वाला फॉर्मूला लगा लो कि प्राइस कम हो गई है
बट द टोटल रेवेन्यू, टोटल अर्निंग्स वो भी कम हो रही हैं. इट मीन्स क्वांटिटी मस्ट नॉट बी इंक्रीजिंग अ लॉट. इट मीन्स दैट द डिमांड मस्ट बी inelastic. Now as far as using the exact words to answer this question, कोई भी word use कर सकते हो. You can just simply write that look, given a fall in price of oil, the quantity of oil being exported has not responded and increased so much so that export earnings have if anything fallen. Therefore the demand for exports is inelastic. Explain why price controls have resulted in shortages of basic foodstuffs in the shops in Venezuela. Use and demand and supply diagram to support your answers. It's again a price ceiling का question. So यहाँ पे तुम्हें basics आने चाहिए. I mean there is no sort of application over here. तुमने से कहना है okay, let's assume this is the market for basic foodstuffs, and if the Venezuelan government has come in and put a price ceiling, then that would mean quantity supplied falls, quantity demanded increases, there would be a shortage. As a result of the shortage, there would be back market, so on and so forth. You will easily get out all of these 4 marks. Again, if you look at the marking scheme, there is 1 mark for proper labeling of the excess, there is 1 mark for picking up a price ceiling, there is 1 mark for picking up or showing the shortage, and then 1 mark for this written brief explanation कि अच्छा इसमें हो क्या रहा है. So, you know, you have to start realizing and you have to start understanding the importance of graphs. Graph के बगैर ना तुम समझ सकते हो ना you can neither score in your exams. Now, this was a poorly attempted question with reference to the data. Now, this is something I want you to learn about case studies. Case study में अगर ये word use हुआ है ना with reference to the data, then your answer has to come out of the passage. अपनी तरफ से तुम फिर assume नहीं कर सकते. If you do that and give a valid answer, you won't get the marks. Marking scheme फिर तुम्हें बताएगी कि look, we were asking you to refer to the passage. So without referring to the passage, you can't answer these questions. So what does he want us to do? Analyze how both demand pull and cost push pressure could explain the change in the rate of inflation shown in table 1.1. So सबसे पहले table 1.1 पे जाओ. What is happening to your rate of inflation? It is increasing. So identify that thing, that our data is showing us that the rate of inflation is increasing, both demand pull and cost push. Again, you will throw in the graph. Again, I am assuming you will properly label them. Demand pull, cost push के graph बनाओगे. And now question को फिर से read करो. Analyze how both demand and cost push pressure could explain the change in rate of inflation. तो तुम्हें पैराग्राफ में कोई ऐसी चीज़, कोई रीज़न ढूंढना पड़ेगा कि ओके लुक, दिस इज़ द रीज़न दैट इज़ टेलिंग मी कि ये वाली डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो रही होगी. सो सम ऑफ यू व्हाट यू डिड वाज कि तुम डिमांड पुल इन्फ्लेशन इस ग्राफ से एक्सप्लेन करी गए हो. केस स्टडीज़ में रिमेंबर दिस थिंग, क्वेश्चन इज आस्किंग यू विद रेफरेंस टू डाटा, तो अपने आप को बताया करो दिस क्वेश्चन इज सॉर्ट ऑफ एन एप्लीकेशन इन द वे कि अच्छा मैंने शो कर लिया ना व्हाट इज़ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, देन आई हैव टू पिक अप फ्रॉम दिस पैसेज वन रीज़न कि क्यों ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो रही होगी. And that reason somewhere over here is कि Venezuelan government, when they can't have enough money through the export revenues, they start printing money. Now again look, I mean I have taught you all of these things. मैंने इन्फ्लेशन पढ़ाते हुए तुम्हें लंबा लेक्चर दिया था इस चीज़ पे कि basically what is the reason for inflation is that central banks print more money. मैंने तुम्हें मिल्टन फ्रीडमैन का कोट भी बताया था कि इन्फ्लेशन इज़ ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ मॉनेटरी फिनोमिना. देयर वाज अ रीज़न आई केप्ट ऑन स्ट्रेसिंग ऑल दीज थिंग्स. मुझे पता है कि दिस इज़ द एक्चुअल रीज़न वाई देयर इज़ इन्फ्लेशन. देयरफॉर अगर तुम्हें केस स्टडी आएगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं यही बात होगी कि मनी सप्लाई हैज़ इंक्रीज. सो तुमने अगर उस चीज़ों को याद रखा हो तो यू विल रिमेंबर द इम्पॉर्टेंस कि प्रिंटिंग मोर मनी क्या है. और मुझे अब फिर से मिल नहीं रहा. कैन एनीबॉडी हेल्प मी, वेयर डज दिस पैसेज से दैट दे हैड टू प्रिंट मोर मनी? कहाँ पे लिखा हुआ है मुझे जल्दी से बताओ. इट्स सो देखो यहाँ पे आई मीन आई गेट इट. तुम्हारे जहन में आएगा कि सर इस सारी चीज़ में से मैं कैसे भाऊँ, मैं सपोज टू पिक दिस अप कि अच्छा इसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन है. दिस इज़ वेयर अगेन एंड अगेन आई विल से जितनी मर्जी तुम्हें तैयारी लगे हुई भी है, वॉच दोज वीडियोज़.
I know these things, I know ये पूछा जाना है पेपर में, and in those videos I stress these things. Therefore उसमें मैं अगर तुम्हें कुछ बता रहा हूँ तो you have to remember those things. You have to remember those things. They will come in handy. So इस question में एक ये 3 marks थे इस graph के, sorry 2 marks for this graph demand pull inflation के, and 2 marks for just picking this thing up. Okay, since they are printing more money, when money supply increases, interest rates will fall, and when interest rates fall, the country's aggregate demand because of an increase in investment will increase. Now again मैंने ये सारी चीज़ें तुम्हें तेज़ बोल दी हैं, but again I would say the same thing. ADAS के सेक्शन में जाओ, वीडियो नंबर 3 इज़ टॉकिंग अबाउट द शिफ्ट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, और उसमें मैंने यही मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट एंड अ फ्यू मोर, का कपल ऑफ मोर, बिकॉज आई नो दे आर इंपॉर्टेंट, दे विल शो अप अगेन एंड अगेन. सो जब तुम पेपर में गए हो एंड इफ़ यू हैव टू सिट डाउन एंड थिंक अबाउट कि अच्छा इंटरेस्ट रेट से एग्रीगेट डिमांड पे पता नहीं कैसे फ़र्क पड़ता है, आई एम सॉरी, देन यू आर नॉट इन अ वेरी गुड पोजीशन. ये चीज़ें तुम्हें अब तक रटी होनी चाहिए, नहीं रटी हुई तो अगेन एंड अगेन आई वुड स्ट्रेस उन वीडियोज़ को देखो, उनको उन सीक्वेंस में याद रखो. और अगर मैं तीसरी वीडियो में तुम्हें इन शिफ्ट्स के बारे में बता रहा हूँ तो प्लीज़ टेल योर सेल्स, कोई वजह है तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि देयर इज़ अ सेपरेट होल वीडियो, इन चीज़ों को तुम्हें पता होना चाहिए. ठीक, सो दैट वाज योर एग्रीगेट डिमांड. अब इसी तरह कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यू हैड टू पिक अप, कि ठीक है एग्रीगेट सप्लाई यू हैव शोन इट थ्रू द डायग्राम, बट यू हैड टू पिक अप समथिंग हैपनिंग ओवर हियर जहाँ से तुम लिंक कर सको. अच्छा, लेट मी गो बैक टू द क्वेश्चन बिकॉज क्वेश्चन भूल जाएंगे हम. आई हैव बीन गोइंग ऑन दिस फॉर quite टाइम नाउ. So with reference to data, I analyze how both demand pull and cost push pressure could explain the change in rate of inflation. So मैं तुम्हें कह रहा हूँ इस क्वेश्चन में we'll first identify from the table that the rate of inflation is increasing. Then we'll give the graph of look, this is demand pull inflation, this is cost push inflation. But the most important thing is from the passage figure out कि क्यों aggregate demand Venezuela में increase हो रही है and therefore demand pull inflation is created, which we have just identified as the increase in money supply. And then cost push inflation, after you have shown it through the graph, it is when the aggregate supply shifts to the left. Pick up one reason from this passage why aggregate supply may shift to the left. Now उसमें बार बार चीज़ के ये passage तुम्हें बार बार बता रहा है your exchange rate has depreciated, the Venezuelan currency has collapsed and therefore imports are more expensive. Now again ये जो मैंने तुम्हें नोट्स भी दिए हुए हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के, द वीडियो में आई हैवंट शेयर्ड इट बट द वे आई टॉट यू इन क्लास एंड दोज हू टेक नोट्स, मैंने तुम्हें तब भी इसी तरह से एक्सप्लेन किया था कि लुक दिस इज़ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड द रीज़न वाई एग्रीगेट सप्लाई में शिफ्ट टू द लेफ्ट इज़ एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इन टर्न रिमेंबर that this increase in cost of production usually happens because your exchange rate falls or the price of petrol increases, or for any other reason if your imported raw materials their price increase तो तुम्हारे मुल्क में cost of production बढ़ती है and you experience cost push inflation. Now out of all of these things, exchange rate is the thing that is again and again being mentioned, drop हो रहा है, import prices increase हो रही हैं, that is something which is being mentioned again and again, so you could have picked up any of these reasons. So that is how, again I mean some of your answers were very very disappointing, very very irrelevant. I understand कि तुम लोगों ने पहले case studies नहीं की हुई and therefore I hope कि this is going to be helpful, but इसमें I mean be sensible, लंबी कहानियाँ नहीं डालनी. Again I would suggest read the question कि वो पूछ क्या रहा है. And the best advice that I got from a very very experienced economics teacher, A-level economics, he is examiner for the A-level exam as well, I loved his advice. वो ये कहते हैं कि मैं हर बच्चे को कहता हूँ कि प्लीज़ फर्स्ट ट्रांसलेट द क्वेश्चन फॉर योर सेल्फ इन उर्दू, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट इट इन उर्दू. जितने मर्जी तुम अंग्रेज़ दान हो, योर मदर टंग इज़ उर्दू, ट्रांसलेट द क्वेश्चन फॉर योर सेल्फ इन उर्दू. एंड टू दैट एडवाइस आई वुड सजेस्ट make this breakdown कि ये demand pull cost push 2 marks for diagrams and 2 marks for picking up and explaining the reason. ठीक है, यहाँ 6 marks हैं, we have ended up with 8 marks. That is still safe, that is still safe. Okay, so always know okay, where are you going to score marks and what are the points you are going to explain. Now let me end up with this part E. Discuss whether the estimated rate of inflation in Venezuela will allow the Bolivia to continue to perform all of its functions of money. The estimated rate of inflation, पहले उस पे चले जाओ. I mean all of you can pick this up that this is an abnormally high rates of inflation tending towards what we learned as hyperinflation.
So question is basically asking you, when there is a lot of inflation, when there is hyperinflation, how are the functions of money affected? 6 marks, tell yourselves 3 functions of money, 2 marks for each, 2 marks to explain each of these functions, and 2 marks how each of these functions will be affected. Again, you will end up with more marks than 6, but that is fine. Going for more marks is fine, but this is how you structure your essay question cake. It's the store of value. Again, I mean, you don't remember those things. मैं तुम्हें फिर बता तो दूंगा, but I have already told you these things. I don't know तुम notes नहीं लेते क्या नहीं करते, but you didn't, most of you didn't remember them. मैंने तुम्हें बताया था कि the first function to be affected when there is inflation, the first function of money that is affected is store of value, which simply means that if you keep 10 rupees in your pocket today, hoping कि मैं महीने बाद spend करूँगा, if there is inflation, then those 10 rupees will not store their full value. They would not buy you after 1 month what they could buy you today. So जितनी inflation होती है सबसे पहले, that means the store of value function of money is affected. Then the next function that you had to remember is the unit of value or unit of accounting. I know some of you have memorized these functions by different names, but the basic idea is 3 functions हैं: store of value, unit of accounting or unit of value, and the medium of exchange. So this is the sequence I told you कि सबसे पहले store of value function matter होता है, it is affected. Then the unit of value function is affected if inflation is even more and it continues. Unit of value का मतलब सिर्फ ये है कि if I ask you how profitable your business is, if I ask you what is the value of your car, if I ask you what is the value of something you possess, then immediately all of us instinctively mention the value of a particular thing in rupee terms, in money terms. So that is where we say that money, it is a unit of value, it is a unit of accounting, it is the unit in which profits and worth of things are measured. But अगर inflation इतनी ज़्यादा है कि something that cost 1000 rupees today will cost you 1 million rupees in 1 month's time, तो आप कहते हो it's worthless, it's useless to mention the value of things in terms of money, because money की तो अपनी value इतनी unstable हो गई है. This requires a lot of inflation. Store of value तो immediately affect होता है, but this requires serious amount of inflation. And if there is an extremely serious amount of inflation, then the main function, that money is the medium of exchange, meaning when you have to exchange one thing for another, you use money as the medium with which you exchange those things. अगर इतनी inflation हो जाए that things are losing value by the day and by the hour, then people, let's say, won't exchange their expensive car in return for such valueless money. तो हम कहते हैं वो medium of exchange function, it is the last thing that can go wrong, and it basically means the collapse of the whole economic system. Now मैंने तुम्हें, I have sort of basically given you a quick recap or explanation or revision of this thing. But again, what I want you to learn is कि यहाँ पे functions of money पे inflation का क्या effect होता है. First of all, tell yourself there are 3 functions. So मैं हर एक में से भी 2 marks निकाल लूँ. I have my 6 marks. That is how you break things down. Good question? Anything anybody wants to ask? This was supposed to be part के लिए कितने functions of money हम mention करें? कितने हैं मुझे बताओ? Some of you memorize 3, some of you memorize 4. The fourth function is a combination of function number 2 and 3, but let's not get into it. अगर तुम्हें 4 आते हैं, you can mention 4. You can mention 4. But मतलब मैं तुम्हें फिर से यही कहूँगा कि if you have 6 marks and if you are running out of time, तो instead of aiming कि मैंने चारों के 4 functions बताने हैं, be sensible, tell yourselves कि 3 function भी at least I'll get 2 marks. The way it works is function mention किए 1 number, उसकी explanation दी, at least you will get 1 mark. So sometimes I don't know, I am surprised, I am happily surprised Azik, तुम्हारा आंसर बहुत डिटेल होता है, but somehow you manage your time, which is great. But if you are running out of time, तब अपने आप को बताया करो कि okay, I know a lot of things, but let me just squeeze 6 marks out of it. 3 कोई reason पकड़ता हूँ, उनकी छोटी छोटी explanation देता हूँ, and that's it. But your answers are really very, very well detailed and very, very well written, very clear, very, very clear. You try to get into risky things, मतलब तुम पूरी, you go for all of it, but you pull it off. Amazing. हाँ जी, और प्लीज़ आस्क, कोई चीज़ अभी ज़हन में आ रही है तो आस्क मी.
डेटा रिस्पॉन्सेस में क्वेश्चंस जो हमें इन्हीं मार्क्स के पैटर्न्स में आएंगे ना, जैसे yes almost more or less more or less आखिर में तुम्हें डिस्कस आना ही आना है. अच्छा ये दिस पार्ट ई इज़ रियली ईजी. अक्सर पार्ट ई काफ़ी मुश्किल होता है. आई मीन here it is easy in the sense कि it is it can be answered using the thing that we have learned as a topic. यूजली पार्ट ई इस तरह का नहीं होता कि अच्छा तुमने ये टॉपिक किया हुआ है उसकी नॉलेज यहाँ पे जो है वो झाड़ दो. यूजली पार्ट ई समथिंग वेयर यू एक्चुअली हैव टू थिंक अबाउट द केस स्टडी दैट यू हैव एट हैंड. सो दिस इज़ वाई अगेन वॉट आई वॉन्ट यू टू टीच हेयर इज़ नॉट कि अच्छा बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन आएगा. वॉट आई वॉन्ट यू टू टीच हेयर इज़ कि बी सेंसिबल. जितना मर्जी उस वक्त ऑटोमेटिक एक्चुअल एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आ जाए, जस्ट टेल योरसेल्फ 6 नंबर है. आइदर आई पिक अप 2 सॉलिड रीजंस एंड गिव डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. इफ़ आई कैन कम अप विद 3 रीजंस तुम्हारा काम आसान हो गया कि 6 मार्क्स. एनी लॉजिकल रीज़न आई गिव विद अ सिंगल लाइन ऑफ एनी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, मैं हर रीज़न से 2 मार्क्स, 3 रीजंस आई हैव माई 6 मार्क्स.